Good morning. We now start with session 28. In the previous session, we saw a list of compound words without hyphen. Let us see today a few such words with hyphen, where hyphen comes. Now you will ask where hyphen will come and where it will not come. Okay. Nobody can give any rule. Okay. What is standard? We need to follow that, and so one has to be careful. Yes. Absent-minded, air conditioned, by law, check in, By law, by law, check in. check in, close up, What is by law? No. That is not hyphenated. They are two. According to law is by law. Okay, separate. And by law is something like sub rule, which is not the law of the land. For example, if you are staying in a society, okay, that society, housing society, may have certain rules. So those are bylaws. Okay. city-state, far-flung, father-in-law, first class, free for all. Free for all. Okay. Do you know what is a city state? Can you tell me the name of a city state? Singapore. In ancient times, there were a lot of city states: Athens, Sparta, Syracuse, Troy. Okay, they were city states, which were like independent countries of today, but spread over particularly a city. Okay. Get together, half mast, in depth, knee jerk, life size. What is knee jerk? A situation for which we were not prepared in advance, and we were happily sitting, okay, or happily standing, relaxing, and suddenly when the situation comes, we make a reaction which is all of a sudden, which was really not needed. So that is knee jerk reaction. Okay. Mass produce, merry-go-round, passerby, red hot, self-service. Okay, just a minute. Passerby. What will be its plural? Passers-by. Passers-by. Yes. Startup, strong arm, third rate, time consuming, trade off. Strong arm. Just use this in a sentence. Or use the entire strong arm as an adjective. I do not like this strong arm tactics. Okay. So the entire strong arm is coming as adjective to tactics. Okay. Continue. Up to date, warm up, well-being, worn out. Okay. Now here make note. Sometimes to the noun here something comes as adjective which has two or three different parts which are supposed to be connected with hyphen. For example, if you are talking about first class fare, then you will say first hyphen class fare. If you are trying to talk of both first and second class fares together, then the way to write it is first hyphen space and space, then second hyphen class, then space fares, as if you are using the brackets first class and second class. Okay. Similarly, 2 paise coins, 3 paise coins and 5 paise coins. If you want to say it together, then you will say 2, 3 and 5 paise coins, and you will write it like this. Of course, most of the people here have not seen 2, 3 and 5 paise coins. Okay. There used to be a time when these were visible. Okay. Now when to put hyphen and when not to, that is an issue. Here warm and up are two different words. Give the players 10 minutes to warm up. It is a phrasal verb. Okay. Warm up, you know, to get ready. Okay.
Now, here warm up together is the adjective to exercise. This warm up exercise is important, and here there will be hyphen. Okay. Give the players 10 minutes to warm up. This warm up exercise is important. Similarly, I have a special interest in this project. Special is an adjective to interest. Here we need to consult the special interest groups also. Okay. So, those groups which are called special interest groups. So, here special interest is coming as an adjective to group. Okay. So, this whole thing is hyphenated. Okay. Yes. Like passers by, or the plural for passer by. What would be the plural for startup? Startup is an adjective. So, you do not talk about plural. Ups, Oh, okay. You have heard startups. Okay. That is when it is used as a noun. That is for startup business. in that case, why S is coming after up, even come after start? The rule is that the principal noun in the thing should get that S. In startup, there is no noun for that matter, and startup as it is actually adjective. And when you use startups, you are actually using a shortcut for startup businesses. Okay. So, for such shortcuts, standard rules do not exist. Okay. Now, one very important topic which we have been talking around for a long time since Q1 itself, that is supporting action of special verbs. Till now we have seen three important special verbs: do, be and have, and one more verb, use, we have seen in a particular situation, and its use as special verb is only in that particular situation for habitual past. Now, we attempt a comprehensive session on special verbs. Read out this line. What do we do for the treatment of this patient? This do is ordinary, okay, ordinary verb, just like do, karna. This do is special in the supporting role, which you typically use for making negative and interrogative sentences. What do we do for the treatment of this patient? इस मरीज के इलाज के लिए हम लोग क्या करें? ये करें यहाँ पर है और ये हिंदी में नहीं है, ठीक है. इंग्लिश में क्वेश्चन सेट करने में इस डू का यूज होगा. नेक्स्ट, Did he contact his family for help? दिस इज स्पेशल वर्ब, ओके, सपोर्टिंग वर्ब. इट इज हेल्पिंग दिस कॉन्टैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्या उसने अपने परिवार के साथ संपर्क किया मदद के लिए? ओके, दैट पेशेंट. ओके, He does not have anybody close to him. here have is the ordinary verb, the actual verb. This is a supporting verb. Does not have anybody close to him. उससे नज़दीक, उसका नज़दीक कोई है नहीं. Do try to collect some money for his treatment. मतलब कुछ पैसे कलेक्ट करो उसके इलाज के लिए इलाज का। कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करो. Do here is used for emphasis. Do try, ढंग से कोशिश करो प्लीज, ठीक है. So this emphasis, that is the special purpose or supporting action that this do is giving. Next, the supporting action of another special verb, be. Is anybody collecting funds? Many people were ready to pay. Be coming here as well as here to support. Okay. No, this is ordinary. Many people were ready. बहुत सारे लोग तैयार थे पैसे देने के लिए, ठीक है. Is anybody collecting funds? क्या कोई पैसे जमा कर रहा है? ये सपोर्ट करने के लिए आया है. बी कलेक्ट को सपोर्ट कर रहा है. इज कलेक्टिंग इज द कंप्लीट वर्ब. देन an ordinary use of be. Be sure that helpers are there to look after him. This is ordinary use, this is also ordinary use. Okay. Be sure that helpers are there. Okay. It is not, neither of the bees supporting anything.
Okay, I am not satisfied yet. this is supporting. I am not satisfied. To support the verb in passive voice. Okay, Why was the doctor indecisive? डॉक्टर हिचकिचा क्यों रहा था? Why was the doctor indecisive? This is ordinary was. Okay, Perhaps the operation will be difficult. will be. यहाँ पर be मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब. will जैसा आप जानते हैं फ्यूचर दिखाने के लिए हमेशा सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे आता है. In case of dilemma, I would consult a senior specialist. इन केस ऑफ डायलेमा आई वुड कंसल्ट ए सीनियर स्पेशलिस्ट. वुड विल का ऑफिशियली पास्ट टेंस है, ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये विल से काफ़ी खिसक गया है. विल का पास्ट टेंस बोल के हम लोग इसको पहचानते नहीं हैं. हम इसको इस सेंस में पहचानते हैं इन केस ऑफ डायलेमा, मतलब कि कन्फ्यूजन की हालत में आई वुड कंसल्ट ए सीनियर स्पेशलिस्ट. मैं एक सीनियर स्पेशलिस्ट की राय लेना पसंद करूँगा. ठीक है, Shall we call Dr. Sen for consultation? क्या डॉक्टर सेन को सलाह मशवरा के लिए बुलाया जाए? क्या हम लोग बुलाएंगे? यहाँ पर शैल सपोर्ट कर रहा है फ्यूचर करने के लिए. ठीक है, विल से भी कर सकते हैं आजकल. ओरिजिनल क्लासिकल रूल में वी के साथ और आई के साथ शैल आता था. One should be careful about such difficult cases. दिस बी इज ऑर्डिनरी. बी केयरफुल, सावधान होना चाहिए. शुड इज टेक्निकली ऑफिशियली द पास्ट टेंस ऑफ शैल, लेकिन आजकल उसे कोई इंटरप्रेट नहीं करता है. दिस इम्प्लाइज ए मोरल नेसेसिटी. वन शुड बी केयरफुल अबाउट सच डिफिकल्ट केसेस. ऐसे मुश्किल केसेस के बारे में जो है लोगों को सावधान होना चाहिए. ठीक है, We will act as he has willed. मतलब जैसा वो चाहता है वैसा हम करेंगे. हाँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने चाहा है. सो दिस विल इज ऑर्डिनरी. चाहना, ये विल का असली ओरिजिनल मतलब है अपने अर्थ में. ओके, इच्छा करना. हैव इज सपोर्टिंग. ओके, उन्होंने जैसा चाहा है हम वैसा करेंगे. ये सपोर्टिंग है. ठीक है, ये विल सपोर्टिंग है, ये विल ऑर्डिनरी है. आपको कैसे पता चला कि ये भगवान की बात हो रही है? ओह लवली, एच इज कैपिटल. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने कितना कितना कवर किया? डू हर तरीके से, हैव बी हर तरीके से, हैव हर तरीके से, शैल शुड विल वुड, इतना सारा हम लोगों ने कवर किया है. आगे फिर चलते हैं. हैव में और थोड़ा सा बात करते हैं. They have brought some new things which we did not have. ये हैव ऑर्डिनरी है, हमारे पास नहीं था. ये डू सपोर्टिंग है, ये हैव भी सपोर्टिंग है. ये हैव सपोर्ट कर रहा है ब्रिंग को परफेक्ट टेंस में जाने के लिए. उन लोगों ने लाया है कोई ऐसी नई खबर which we did not have, जो हमारे पास नहीं था, जो हमें पता नहीं था. ठीक है, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोगों के पास नहीं था. फाइन. Have you not paid him? मतलब क्या तुमने उसे पेड मतलब कि ऐसे नहीं वापस करें? क्या तुमने उसे पैसे दिए नहीं? ठीक है, हैव परफेक्ट टेंस में सवाल पूछने में सपोर्ट करने के लिए आता है. ऑर्डिनरी में डू आता था, ठीक है, और सिंपल में डू आता था, और कंटिन्यूअस में बी आता था. परफेक्ट में हैव आता है. ठीक है, हैव यू नॉट पेड हिम, क्या तुमने मुझे उसे पैसे दिए नहीं? Now he has to deliver the goods. इसका मतलब है कि हम मान रहे हैं कि तुमने पैसे दिए हैं. ठीक है, अब चूंकि तुमने पैसे दिए हैं इसलिए उसको सामान देना चाहिए. नाउ ही हैज़ टू डिलीवर द गुड्स. कंपल्सिव, उसे सामान देना पड़ेगा. The Indus Valley people used to use bronze to make weapons. दो यूज़ है, ये ऑर्डिनरी यूज़ है इस्तेमाल करना, और ये यूज टू जो है हैबिचुअल पास्ट बताने के लिए है कि कॉमन इवेंट इन द पास्ट. ओके, He can open his shop here. सपोर्टिंग वर्ब कैन. ओके, कैन का फिफ्थ फॉर्म कैनिंग नहीं होता है. ठीक है,
इस सेंस में कैन को डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। शैल का शैलिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन विल का विलिंग होता है ऑर्डिनरी सेंस में। ओके, ही कैन ओपन हिज शॉप हियर, वह यहाँ पर अपनी दुकान खोल सकता है। सकने के लिए जो है ये सपोर्टिंग वर्ब है। You cannot stop him. तुम उसे रोक नहीं सकते हो, और कैन और नॉट अलग अलग नहीं, एक साथ लिखा जाता है, कैनॉट, ठीक है। I could not complete your work. कैन का पास्ट कुड, कैनॉट का पास्ट कुड नॉट, सपोर्ट कर रहा है, मैं काम समाप्त नहीं कर पाया था। Could you wait for a while? क्या मतलब निकला? हाँ, इसका सीधे सीधे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन बात वो नहीं है। पोलाइटली कहा जा रहा है कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। कैन उतना पोलाइट नहीं होता, कुड बोलकर उसको पोलाइट किया गया, ठीक है। तो कैन को पास्ट ही नहीं पोलाइट करने के लिए भी कुड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुड यू वेट फॉर ए व्हाइल, जैसे कि मान के ही चल चुके हैं कि तुम नहीं इंतज़ार करोगे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि ऐसा कर सकते थे क्या, ठीक है। बहुत एपोलॉजेटिक, बहुत पोलाइट। May I go now? परमिशन मांगना, ठीक है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? No, I might need you here. मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ेगी मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। ऑर्डिनरी नीड और इसका जो है मदद करने के लिए माइट। आई नीड यू हियर मतलब कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई मे नीड यू हियर काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। आई माइट नीड यू हियर थोड़ा और माइल्ड हो जाता है, थोड़ा और डाउटफुल हो जाता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ भी सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड टू बी वेटिंग हियर फॉर दैट लिटिल चांस, ओके। अब नीड, यहाँ पर नीड देखा था ऑर्डिनरी सेंस में, अब सपोर्टिंग। ऑर्डिनरी भी मतलब निकाला जा सकता है। We need to check the result. हमें रिजल्ट चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे The process need not be specified. यहाँ पर नीड का स्पेशल फॉर्मेट देखिए। नॉर्मल वर्ब्स के साथ होता है डज नॉट नीड, लेकिन नीड के साथ होता है डज नॉट डू, डज नॉट हैव, डज नॉट गो, ओके। लेकिन नीड के साथ नीड नॉट भी होता है, और देयर इज ए एंड देयर इज ए डिफरेंस। ही डज नॉट नीड टू गो, और नहीं तो ही नीड नॉट गो। जब डज नॉट नीड की जगह पे नीड नॉट आ जाएगा तो उधर टू गो नहीं साफ गो आएगा, ठीक है। ही डज नॉट नीड टू गो इज इक्विवेलेंट टू ही नीड नॉट गो, ओके। They let him go unchecked. लेट अनदर सपोर्टिंग वर्ब, क्या मतलब निकल आएंगे? उसको अनचेक को जाने दिया गया, हाँ, अलाउ करना। लेट इज टू अलाउ। Let us accept this fact. इस सच्चाई को मान स्वीकार कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रपोजल, ओके, प्रपोजल, लेट अस एक्सेप्ट। Before being elected to lead, he must prove his ability. बीइंग ये सपोर्ट कर रहा है इलेक्टेड को। बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू लीड, नेतृत्व करने के लिए चुने जाने के पहले ही मस्ट प्रूव हिज एबिलिटी, उसे अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए, ओके। नहीं तो हम लोग उसको इलेक्ट करेंगे ही नहीं, ओके। I'm planning to try this test. आई एम प्लानिंग टू ट्राई दिस टेस्ट, ये टेस्ट कोशिश करने के बारे में मैं योजना बना रहा हूँ। सपोर्ट कर रहा है प्लान को, अब उसको थोड़ा जोर दे रहे हैं। I must take the challenge. ये चुनौती मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। He dares us to fight. वो हमें लड़ने के लिए चुनौती देता है, ठीक है। डेयर मतलब चुनौती देना। He dare not oppose his leader. उसमें अपने नेता को जो है नेता के विरोध करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। हमें तो चैलेंज कर लेता है, हमें तो लड़ने के लिए बुला देता है, लेकिन अपने लीडर के खिलाफ वो नहीं जा सकता है, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। सो डज नॉट डेयर नहीं, डेयर नॉट। जैसे नीड नॉट होता है वैसे डेयर नॉट।
ठीक है. सो ये सब सपोर्टिंग एक्शन जो है स्पेशल वर्ब्स का, इसको ठीक से समझा कीजिए, ठीक से यूज़ कीजिए. One important issue which you should keep in mind is that the main issue in syntax is subject verb agreement. Okay? And sometimes if the subject is long, then people miss the main subject word from the last word or trailing word of the entire subject. Read out this. The country is falling. देश गिर रहा है, देश का पतन हो रहा है. Now this one, The people of the country are falling. the people of the country are falling. People is plural, so are. So some people see the country here and put is here, and that is dangerous. That will be wrong. The people of the country are falling. Next, The courage of the people of the country is falling. okay. What is falling here? Not the country, not the people, the courage. Okay. So courage is the subject word. So is falling. The plans to maintain the courage of the people of the country are falling. What are falling now? Plans. Okay. So देश की हालत बहुत ही खराब है, मानना पड़ेगा अगर ये सब सही बात है तो. Hopefully that is not happening with our country. It is about some other country. Okay. Another This table is broken. is because it is table. Next, The cups on this table are broken. cups which are broken. Okay. The tray for the cups on this table is broken. Okay. So this time the tray is broken. The handles of the tray for the cups on this table are broken. So here handles are broken. Okay. Next, One of the handles of the tray for the cups on this table is broken. by this time many people will confuse and put something wrong. Okay. So it is one of the handles which is broken. So is broken. So it is important to capture the subject word of this length correctly and accordingly put the verb. Okay. When you write something, a composition, okay, some long thing in continuity over a lot of flow, you have got a lot of idea, okay, and you try to put it down properly. So the issue arises whether you should write in short sentences or long sentences. Okay. Short sentences are basically the best. It is best to write short sentences. Okay. You are less likely to make mistakes in them. The reader also will find the text easy to follow. Connect these in a single sentence. Even that is not needed. You can make it. It is best to write short sentences which will avoid mistakes for you and make it easy for the readers. Okay. That way it slightly changes, but it becomes more natural, and it does not make such a long one. Okay. So long it did not become, but then there are situations where you may decide to write long sentences. However, there are situations when a composite idea is better expressed through appropriate binding of its units through connectors and pauses marked with punctuation signs, the task of which is to assist the reader in interpretation. Okay, this is a long sentence. Break it into a number of short sentences. You will make it that long. Postpone this thing. Sometimes a composite idea is better expressed through appropriate binding of its units. this is long enough. Units of a composite Sometimes you get a composite idea
that is better expressed through appropriate binding of its units. Such bindings can be effected through connectors and pauses. These are marked by punctuation signs. Their task is to assist the reader. Okay. In such situations, you may write, that is coming now. Therefore, you may consider using a well knit long sentence if you find that a series of short ones will fail to capture the matter so effectively as you identify the entire idea as a single message to be communicated. Okay. Suppose you identify the entire idea as a single message to be communicated. Okay. Full stop. You find that a series of short sentences will fail to capture the matter so effectively. Put another full stop. Then you put this, in such situations, you may consider using a well knit long sentence. Okay. So, some authors typically write short sentences, their writing is quite often very powerful. Okay. But sometimes some idea appears which as a composite idea together makes one sense, and if you try to split it up, you find that the exact message that you wanted to communicate, that gets scattered. In that case, you have to try to put together the entire idea, but while doing that you have to be careful to put all the information correctly, assemble them in the proper manner and put appropriate punctuation signs so that the reader does not jumble up the pieces of information. So, in any situation, just check with yourself that you are trying to make a sentence which is just of the length which you can handle. Okay. If you cannot handle a very long sentence, this is the typical source of mistakes among people who know more or less fine, but cannot handle too complicated things. They start the sentence with one theme, one tone, and by the time they end it, they have shifted gears 4 times, and then the sentence actually becomes meaningless. So, be careful about that. See an example, and as I read, if you can listen to me and understand the meaning continuously as I read, even without reading it yourself, then understand that for comprehending you have got the appropriate level that you can understand whatever long sentences you come across. As does the bird among beloved branches, when through the night that hides things from us, she has rested near the nest of her sweet fledglings and, on an open branch, anticipates the time when she can see their longed for faces and find the food with which to feed them, chore that pleases her, however hard her labours, as she awaits the sun with warm affection, steadfastly watching for the dawn to break, so did my lady stand, erect, intent, turned toward that part of heaven under which the sun is given to less haste, so that, as I saw her in longing and suspense, I grew to be as one who, while he wants what is not his, is satisfied with hope. Okay? So, part of the assignment for today is to translate it into Hindi or to break it up into a number of shorter sentences. It will take some time. And the part B of this exercise is to take a similar passage, not so long sentence, but with quite a few long sentences in Hindi and translate it into English. This is from the preface of a famous Hindi book. जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखें, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वो मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, 2 बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथासूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि
कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। वे एक ही को पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूँगा। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग वे क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त पटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवनी के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कलावस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कैसी भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। I read it out in order to communicate to you the intonations so that the pauses you put in the appropriate places in the Hindi text, which will to an extent help you while translating it, while expressing it into English. Okay, any questions on these topics? Okay, so we stop here and continue next with session 29. Thank you.